हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक वे इजी में। तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं हमारी बीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशंस की। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सॉम के आज हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ ग्रेजुअली varying लोड फ्रॉम 0 at B and W per unit length at A is shown in the below figure. The shear force at B is equal to option A WL by 6, ऑप्शन बी WL by 3, ऑप्शन सी WL, ऑप्शन डी 2 इंटू WL by 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WL by 6। चलो, तो इस क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेकिंग सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। So we get RA plus RB is equal to WL by 2, where WL by 2 is load due to UVL. Then take sum of moment at point A is equal to 0. Then we get WL square by 6 minus RBL is equal to 0. Hence RB is equal to WL by 6। यह है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। Question number 2. The resultant of two equal forces P making an angle theta is given by option A 2P sin theta by 2, option B 2P cos theta by 2, option C 2P tan theta by 2 and option D 2P cot theta by 2। तो यहाँ पे देख ही लिया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी 2P cos थीटा बाई 2। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी इसके नीचे मैंने दिया है, तो पढ़ लेना। चलो, तो अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन इज ऑप्शन ए पाई डी क्यूब बाय 16, ऑप्शन बी पाई डी क्यूब बाय 32, ऑप्शन सी पाई डी रेज टू 4 बाय 32 and option D pi d raised to 4 by 64, and the correct answer is option C pi d raised to 4 by 32। Question number 4, the friction experienced by a body when at rest is known as option A static friction, option B dynamic friction, option C limiting friction, option D coefficient of friction, and the correct answer is static friction, where static friction is more than the dynamic friction experienced by a body. The reason beyond this Newton's law of motion, static word unveiling the friction acting at a static condition at a rest। Question number 5, the energy possessed by a body for doing work by virtue of its position is called as ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। देखो, यहाँ पे सब बच्चे फॉर डूइंग वर्क इस एक वर्ड के कारण काइनेटिक एनर्जी करके आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए नेचर ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी शेप ऑफ द सरफेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेचर ऑफ सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन hollow cone lies on the axis at the height of option A 1/4 of the total height above base, option B 1/3 of the total height above base, option C 1/2 of the total height above base, and option D 3/8 of the total height above the base, and the correct answer is option B 1/3 of the total height above the base। देखो, यहाँ पे हॉलो कोन दिया है, इसीलिए इसका आंसर 1/3 हो गया।
हॉलो सिलेंडर या हॉलो रेक्टेंगुलर होता तो 1/2 हो जाता। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है, ये भी आता है एग्जाम में। In a single threaded worm and worm wheel, the number of teeth on a worm is 50 and the diameter of the effort wheel is 100 mm and that of the load drum is 50 mm. The velocity ratio is option A 50, option B 100, option C 200, ऑप्शन डी 400। देखो तो यहाँ पे हमने दिया है, एक मिनट हम देखते हैं। चलो, वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला है वी आर इज इक्वल टू डी इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, where d is a diameter of wheel, where this is 100 into t is 50 and small t is also small d also 50. So the correct answer is 100. The velocity ratio is the 100. चलो तो आगे बढ़ते हैं। Question number 9. The moment of inertia of a hollow circular section as shown in the below figure about x-axis is option A pi by 16 d square minus d square, option B pi by 16 d cube minus d cube, option C or pi by 32 d4 raised to minus d4 raised to, option D pi by 64 d raised to 4 minus d raised to 4, and the correct answer is option D is the correct answer, pi by 64 d raised to 4 minus d raised to 4। यहाँ पे कैपिटल D means the outer cylinder's diameter and the small d is inner cylinder diameter। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10. The forces whose line of action are parallel to each other and act in the same direction are known as, ये बहुत ही easy question है। Option A is coplanar concurrent forces, option B coplanar non-concurrent forces, option C like parallel forces, option D unlike parallel forces, and the correct answer is option C like parallel forces। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11. The skidding away of the vehicle on a level circular path can be avoided if the force of friction between the wheels and the ground is dash the centrifugal force। ये थोड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, चलो प्रैक्टिस तो करनी होगी हमें। ऑप्शन ए लेस देन, ऑप्शन बी ग्रेटर देन, ऑप्शन सी इक्वल टू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी greater than, greater than। Next question, of question number 12. The mechanical advantage of the lifting machine is the ratio of option D option A distance moved by effort to the distance moved by load, option B load lifted to the effort applied, option C output to the input, option D all of the above, and the correct answer is option B load lifted to the effort applied, load lifted upon effort applied, ये है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है मैकेनिकल इफिशिएंसी, इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू द स्लाइड ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, option C rolling friction, option D kinematic friction, and the correct answer is option A limiting friction। Question number 14. Which of the following are vector quantities? Option A linear displacement, option B linear velocity, option C linear acceleration, option D all of these,
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। देखो ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 15. When a body of mass m attains a velocity v from rest in time t, then the kinetic energy of translation is। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 0.5 एम वी। ये स्क्वायर है, 2 नहीं, एम वी स्क्वायर है। यही इसका करेक्ट आंसर है। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। Question number 16. The algebraic sum of the resolved parts of the number of forces in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction is known as। Option A, principle of independence forces, option B, principle of resolution forces, option C, principle of transmissibility of forces, option D, none of these। And the correct answer is option B, resolution forces। resolution forces। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ hollow circular section about a central axis perpendicular to the section of a compared to its moment of inertia about horizontal axis is। option A, same, option B, doubled, option C, half, option D, 4 times। and the correct answer is option B, double। D-U-B-L-E, double। यही इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। ये फिर से एक प्रॉब्लम है, छोटा सा आ सकता है ऐसे प्रॉब्लम। चलो देखते हैं आज। The moment of inertia of a rectangular section 3 cm wide and 4 cm deep about x axis is। देखो यहाँ पे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mi इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाय 12। ये तो सबको मालूम होगा, ये होना ही चाहिए। चलो तो देखते हैं, हमारे लिए जगह नहीं है, ट्राई करते हैं। 3 इंटू 4 क्यूब अपॉन 12। सो इसका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर रेस टू 4। रेस टू 4 से सेंटीमीटर रेस टू 4 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है। चलो तो सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। Moment of inertia of a rectangular section having a width b and depth d about an axis passing through its center of gravity and parallel to the depth d is। option A, db cube by 12, option B, bd cube by 12, option C, db cube by 36, option D, bd cube by 36। and the correct answer is option A। यहाँ पे देखो डी बी क्यूब बाय 12 यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बी डी क्यूब बाय 12 करके आते हैं, लेकिन गिवन डाटा में देखो क्या दिया है, विड्थ इज बी एंड डेप्थ इज डी। सो द आंसर इज डी बी क्यूब बाय 12। चलो तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कपल प्रोड्यूसेस option A, translatory motion, option B, rotational motion, option C, combined translative and rotational motion, option D, none of the above। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बुक में ऑप्शन बी दिया है और बहुत सारे बुक में ऑप्शन सी भी दिया है, तो आज हम प्रेफर करेंगे ऑप्शन सी। यही इसका करेक्ट आंसर है, दोनों मोशंस ट्रांसफ़र करता है। चलो तो आज के लिए काफ़ी हो गया ये आज का सेक्शन, और अगले वीडियो में भी हम सॉम के इक्वेशंस देखेंगे, लेकिन अगले सेक्शन वाले। तो ऐसे ही हम हर सेक्शंस कंप्लीट कर देंगे हर रोज़ के वीडियो में। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।